असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने ऐलान किया है कि राज्य सरकार जल्द ही लव जिहाद के खिलाफ कानून लेकर आएगी, जिसमें दोषी को सजा के तौर पर आजीवन कारावास का प्रावधान होगा। इसके साथ ही उन्होंने बीजेपी सरकार द्वारा किए गए कुछ अन्य फैसलों का भी घोषणा की। ये घोषणा गुवाहाटी में आयोजित बीजेपी स्टेट एग्जीक्यूटिव मीटिंग में की गई। लैंड जिहाद को लेकर भी सख्त कानून आएगा। दूसरे धर्म के नागरिक की संपत्ति खरीदने पर सरकार की इजाजत जरूरी होगी। ইলেকশনৰ সময়ত আমি লাভ জেহাদৰ কথা কৈছিলো। অসমত আমি অহা কিছুদিনৰ ভিতৰতে এখন নতুন আইন আনিম, য'ত নেকি লাভ জেহাদৰ কাৰাদণ্ড আজীৱন কাৰাদণ্ডলৈ আমি ৰূপান্তৰ কৰিম। অবিভক্ত গোৱালপাৰা জিলাৰ এক বিশাল মহত্ব আছে, কিন্তু এটাকৈ থলুৱা লোকসকলৰ পৰা মাটি এটা বিশেষ সম্প্ৰদায়ৰ লোকে কাঢ়ি লৈ গৈ আজি আমাক নিজৰ মাটিতে সংখ্যালঘুত পৰিণত কৰিছে। ৰাজ্য চৰকাৰে এক প্ৰস্তাৱ লৈছে যে অহা কিছুদিনৰ ভিতৰতে আমি এখন আইন আনিম যে অবিভক্ত গোৱালপাৰা জিলাত কোনো আমাৰ মাটি বিশেষ সম্প্ৰদায়ৰ লোকক বিক্ৰী কৰিব নোৱাৰিব।